start with your introduction first. Good morning, sir. I'm Twinkle Shaukin. I'm from Delhi. And, my parents, my father, he used to be a farmer. Now we've stopped farming because he got ill. Uh, and my mother is a homemaker. I have a younger brother. He is pursuing law from IP University, and I am a dentist. I graduated in August 2019, and I've been preparing for my master's since then. That's it. That's all about your introduction. So what about your farms now? Who is farming on your Sir, actually, agricultural that's our lands? source of income. That has been a source of income. So we have rented it out to other people because my father can't do the farming anymore. He had an open heart surgery and everything, so it's Okay. rented out. Okay. So you studied dentistry from which Yes. college? From SGT University, Gurgaon, Haryana. Okay. So whether you were trying for medicine MBBS or you got into dentistry or dentistry was a choice for you. Not really, sir, but when I was younger, I wanted to be a psychiatrist. So I wanted to be a doctor. That was there. And I tried for MBBS. I was getting a college in South India, but since my parents come from an orthodox and conservative setting, they didn't allow me. So I was hopeful. I dropped in here that this time I will make it to Delhi or somewhere near. But the next year I tried, I didn't make it. So Okay. dentistry was the second best option, and I chose it. So what about this course? If you are getting selected in NLU, it's still in South India. So Yes, sir. So this time I have managed to emotionally sort of blackmail my parents that you took my chance 5 years back. If I get it now, you can't take it now. so isn't it negative to blackmail your parent? But sir, I think since my parents uh, are not so educated, so they are just afraid as to how will they manage sending off their daughter and everything. But now 5 years studying dentistry, uh, I think my parents and me we've both metamorphosized into believing that going away for studying is fine. Like we've reached there. Okay. So what made you think about going into policy after your dentistry? You could have stayed in your own field and do wonder in that also. Yes, up until my final year, I was like not even thinking about anything apart from dentistry. I was into prosthodontics. But as soon as I reached my internship, and uh, we are supposed to do internship in 8 different departments, around 45, 50 days each. So when my internship came for public health dentistry, I was completely taken aback by how the subject is, how we're supposed to, you know, uh, travel to distant rural places and make people aware of how knowledge can change, awareness can change so many things. Like it can prevent diseases, it can promote health, it can change, it can take one stress away from families. So if everybody is healthy, it's one stress less, one problem less. So that changed my perspective. And simultaneously, I was also doing my clinical postings. So when I was doing my clinical postings, I was not as engrossed or interested per se. I enjoyed it too, but my in the back of my head, I would thoroughly enjoy going to camps, managing the OPD. That what I was keen at that, as compared to my practicing one-on-one patient care that I did in other postings. So that changed my perspective. And then during my internship, I was fortunate enough, my college collaborated with Colgate. So for a thorough not 6, but 3 months, we went to screening camps in Delhi, all over Delhi, in different schools. So we used to go there. We used to screen children
स्क्रीनिंग कैंप्स होते थे, हम वहाँ पे बच्चों को स्क्रीन करते थे फ्रॉम क्लास KG to 5th, and that also changed my perspective. It just added on to it. I was endeared towards public health, and when I had the real time experience with Colgate, and I went to schools and screened children, and I could identify a disease which would potentially be fatal after a few years if it goes misdiagnosed or unseen. And if I am fortunate enough to diagnose it and make the parent and the teacher aware, so it just changed everything for me then. Okay, like you could have applied for public health courses or other schools which are providing healthcare administration or similar course, public health courses. Yes, sir. So I have applied for public health and public policy because the where have you applied? sir, I have applied for public health in PGI Chandigarh. I gave the entrance in on 22nd June, Okay. and I applied for IIPH Gandhinagar, and there are a few more which are not, the forms are not out yet for JIPMER and IIPH Delhi also. So that's, these are my plans, MPH or MPP, because the final destination is to get into health policy. If I get it via MPH or MPP, it's So which college is over NLU MPP? What is the ranking if you're getting the get to rank the all the courses which you have applied? yes. At what rank we will come? So my priority would be PGI Chandigarh Public Health from there, and second is Masters in Public Policy from NLS. So can you give me few points why you have kept PGI Chandigarh as a top choice? PGI Chandigarh is my top choice because for personal reasons, more it is very nearby to my house, so my parents would be more satisfied. That personal thing still comes in the picture, and secondly, it is more financially affordable, and thirdly, it's these are just my personal things. Academically speaking, I think I am going to extract the same thing from PGI Chandigarh also and MPP also, because I'm very clear in what I want to extract out of the course. So apart from the personal things, financial and my, So okay, what will you miss here in NLU while extracting anything of your choice? Like you are basically trying to work in public health domain. So what exactly you will miss here in NLU MPP? I think epidemiology would be the thing that I'll miss, because if I were to study public health, then epidemiology is becomes a vital subject for it. I will, learn how to research on diseases, the extent, morbidity, mortality rates, and all of that. But in NLS, I am not going to do that. My focus would be more into policy making, economics. In public health, I'm going to study health economics. So it's So can you tell me at what level we are capable in term of dealing with epidemic in India? Since very few institution provides courses for epidemiology. So at what level we are prepared and what are the way to deal with epidemic like corona? yes, sir. Currently, our public healthcare system in India is not the best. Is just, I think it's below average right now. Maybe worse than that. I haven't researched about it. So, but as far as I have read, it's below average and not good, not in a good condition. We've recently initiated with opening different public health schools: PHFI, IIPHS, Gandhinagar, Delhi, Hyderabad, and then there are these are the research institutes and academically speaking. And the I think for us we have a role model in our nation itself, Kerala. Kerala has a very good public health structure, infrastructure, and Kerala has been able to tackle corona much better as compared to rest of the states. I think it's majorly because of that, because recently only I was studying about how state funded healthcare infrastructure countries, for example, New Zealand, Japan, Taiwan, they have performed exceedingly well in handling corona. They were able to tackle it very quickly and
They got the hold of the situation as compared to So what was the difference in their strategy and our strategy? so the difference in their strategy and our strategy is basically uniform access to healthcare. As far as I have read, and So I was there no role of epidemiology or epidemiology based theories or practices? no, so there So is was there any specific theory, any specific mechanism, any specific method or process that we learn in epidemiology so that was being used in Taiwan or that was not being used in India? So was there anything like that? so tracing and testing. I'm if there is if I was to say a mechanism is there. So tracing and testing is the biggest tool in handling communicable diseases, because if you can trace back, if one person has infected 2, 4, 50, 60, how many people, then you can get a hold of the situation. So that's what Kerala, our state, one of our state did. For example, the number of um, average number of people in other states that we were saying कि one if one people has if we were sorry we were tracing back, for example in Delhi, Mumbai, everywhere, कि एक इंसान ने we were going back till 4 or 5 people, and then we were just कि 4 or 5 is enough, they'll not go more than that. But in Kerala we were tracing back things to on minute details up to 40 people. So I think that changes everything in handling the situation. Once you get a hold of if you can trace back things to 40 people, then you can quarantine them, and then the chances of the situation degrading decreases बहुत कम हो So, जाता so the thing is that our curriculum doesn't have any health specific papers, and even you won't find a lot many people related to your discipline or with your kind of study choices or study goals. So, how do you manage to be in a different kind of circle and pursue the goal that you have been desiring in terms so of public health? to answer that question, I think it I think बचपन से ही I've lived in a rural setup, and now it has become urban rural setup. So that uh, that changes things for me, because I have seen people, मतलब हमारे घर के पास कोई बड़ा हॉस्पिटल था ही नहीं, तो हमें अगर किसी प्रॉब्लम से डील करना है, हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए, तो वी हैव टू go to distant places. And same was for my college also. My college was in a rural setup, and my college was the only hospital for around 10-15 villages in that area. So healthcare is not easily accessible to people, and even if it is, then it is expensive. I mean, I'm not saying that India is not producing excellent healthcare. It is in the private sector for who can afford it, but those who can't, it's not uniformly accessible to people. So I think I want to change that. If I am fortunate enough to bring about that change, this is what I want to see. Okay. Where you live in Delhi currently? Yeah. So can you tell me a few of the health policies that Delhi government has introduced? Uh, Abhi to, no sir, I can't. So haven't you heard about Mohalla clinic or I have, but I was going blank. Yes, sir. Mohalla clinic is was introduced by so Aam what kind of purpose Mohalla clinic fulfill? Aadmi Party. The मतलब sir, what extra Mohalla clinic is providing that our traditional system of healthcare structure is not providing in other states? What is the advantage that we are getting through Mohalla clinic? And then sir. it adds in what uh, मतलब what kind of structural changes it provides or goals it achieves. Sir, I think Mohalla Clinic achieves or tries to achieve the goal of uniform healthcare, which I was trying to say. If people have easy access to healthcare in their locality, then the the problem that usually is faced by people who are marginalized or are not at a good financial
level is that they delay the course of treatment, or they avoid the treatment because it affects it. A, it is expensive. B, it is not accessible. C, it is not accessible. So people avoid taking care of themselves. People are not educated enough to actually pay attention to what is wrong with their body. And people who are marginalized and are not doing well financially speaking are more prone to risk factors, are, are more prone to risk factors, and are just, um, हो गया मेरा। Okay. Okay. Just tell me what do you think about the government's attempt in dealing with Corona. Sir, I think the Critique government, it. sir, I think they are doing their best in their capacity, but our public health structure is not so good. So everything is stretched to its maximum capacity. Had we been, if we had focused in the past years over more on the promotive, preventive, and rehabilitation health, then things would have been much better. And Kerala is one example for that. So I think Corona is going to bring about a positive change for our country Mhm. in the in in public health, because I think now government and our nation is going to pay more attention to the urgent need that we have for promotive, preventive, and rehabilitative health and access to healthcare for all. Okay. So that's good, Twinkle. Best of luck. Thank you so much, तो sir. to give you feedback, मतलब जैसे मैंने बहुत कुछ नहीं पूछा जैसे करंट अफेयर्स या तुम्हारे सब्जेक्ट का, that they will ask and you will answer accordingly. My purpose was to check your determination towards the subject and your analytical ability to observe and analyze things. So these were the questions which I basically focused upon. So मतलब एक तो इंट्रोडक्शन वाज वेरी वीक, Yeah. मतलब वो एक तो झील तुम में नहीं दिखता है कि यू रियली वांट्स टू बी इन एमपी। तो पहले तो ये बनाओ कि दैट सब्जेक्ट इज गुड, दैट कोर्स इज गुड, द कॉलेज इज गुड, यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रिकॉग्निशन एंड प्लेटफॉर्म टू लर्न वॉट एवर यू वॉन्ट देयर। ठीक है, तो ऐसा तुम बनाओगी तभी वो झील आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको बढ़ाओ। उसके बाद इंट्रोडक्शन थोड़ा सही रखो। उसके बाद जब हम तुमसे पूछे कि इंडिया की कैपेबिलिटी इन टर्म ऑफ डीलिंग विद एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमिक्स, इसमें तुम्हें थोड़ा सा कैपेबिलिटी जब बोलते हैं तो कैपेबिलिटी टर्म में बात करना चाहिए। जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे यहाँ एपिडेमियोलॉजिस्ट कम है, ट्रेंड एपिडेमियोलॉजिस्ट, ये बोलना चाहिए। कैपेबिलिटी तो मेजरमेंट के साथ बोलोगी ना। हम ड्रिल नहीं करते हैं ऐसे सिचुएशंस को। अगर हम इन जनरल बीच बीच में कभी ना कभी हम ड्रिल करते हैं, क्योंकि वायरस इज वेल नोन टू अस। ये Yes. कोरोना वायरस इज न्यू बट वायरस इज वेल नोन टू अस। Yes. सो इन द केस ऑफ सिमिलर सिचुएशन हाउ वुड हैव रिएक्टेड, इसकी अगर थोड़ी ड्रिल होती तो हम थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर्ड होते, है ना। एक्सपीरियंस मेक्स यू लर्न अ थिंग। अब सिंस देयर वाज नो कोरोना टाइप एपिडेमिक earlier, that doesn't mean we cannot create experience, है ना। जैसे आर्मी है, पुलिस है, फायर वाली टीम होती है, दे क्रिएट स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेस, ड्रिल एक्सरसाइजेस। तो तुमको थोड़ा वैसा ये भी बताना चाहिए था कि वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज और ड्रिल नहीं करते हैं। और दूसरा एक कंसर्न मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम टाइप से भी डेवलप करना पड़ता है। जैसे एवरीथिंग वी डिड हियर न्यू वे, कि कहाँ लिखना है, कहाँ वो करना है। जैसे ट्रेस बैक का है ना, वो टफ क्यों हो जाता है, क्यों ही 4 लोग, क्योंकि हम उसका सही से मैप नहीं क्रिएट कर पाते।
और मैप क्रिएट करने मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं डेवलप कर पाते, तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया के लिए कस्टमाइज्ड नहीं था। जैसे हम और लोगों का हम ले सकते थे बट दैट वाज नॉट इफेक्टिव, बिकॉज दूसरे जगह की अलग प्रॉब्लम्स है ना, उनकी सोसाइटी अलग टाइप की होती है, उनका समाज अलग होता है, मतलब सोसाइटी समाज एक ही हो गया, मतलब उनके रहने सहने का ढंग सब अलग होता है। तो फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव से वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो कैपेबिलिटी पूछे तो कैपेबिलिटी बताया करो, तुम मेटाफर में ज्यादा जवाब देने लगती हो। मतलब you just listen to the sentence and tell only one or two sentence which is basically the answer of that question। फिर उसके बाद तुमको जहां घूमना फिरना है घूम लो अपने बातों से। फिर जैसे तुमसे पूछा गया था कि तुम्हारा पर्पस पब्लिक हेल्थ का है बट एनएलयू में यू वोंट गेट एनी हेल्थ रिलेटेड पेपर, नीदर द कंपनी, मतलब स्टूडेंट्स पीयर ग्रुप नहीं होगा, तो हाउ डू यू मैनेज? तुम पता नहीं कहाँ बचपन में चली गई है ना। तुमको ये सीधा बोलना चाहिए था कि इट इज माय फोकस। तो हम जब भी कोई पॉलिसी के एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे तो आई विल बी taking the example of health related policy, so all the exercises, all the assignments that I would be doing will be related to public health, है ना। The project I'll be doing will be related to public health, the internship that I'll be doing will be related to public health, and I can also, अब जो peer group का कैसे डिफेंड होगा, मतलब ये तो हुआ कि जैसे करिकुलम का पार्ट पे डिफेंड हो गया, हाँ, पीयर ग्रुप नहीं मिलेगा वो कैसे डिफेंड होगा? तो वो तुम बोलोगे कि आई कैन क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली स्टडीइंग पब्लिक हेल्थ, है ना, एंड आई कैन बी द पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क। तो तुम पढ़ रहे होगे एनएलयू में बट यू विल बी नेटवर्किंग विद पीपल इन जिपमेर, पीपल इन पीजीआई, पीपल इन एम्स हु आर एक्चुअली स्टडी। तो पीयर ग्रुप का तो तुम समझ रहे हो ना, समस्या मैंने क्रिएट किया एंड यू टॉक समथिंग एल्स, है ना, उस समस्या को पता नहीं कैसे तुम दूसरे तरह से रिलेट कर दी। तुम सीधा सीधा आंसर बताओ ना, जैसे अगर तुमको नहीं मिल रहा है पेपर, है ना, हेल्थ का पेपर नहीं मिल रहा है, तो यू कैन क्रिएट ऑल द असाइनमेंट्स, ऑल द इंटर्नशिप, ऑल द प्रोजेक्ट्स इन हेल्थ। तो पहला चीज तो ये मेकअप हो गया, ठीक है। रिसोर्सेज की कमी तो होती नहीं है, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, लेक्चर्स हैं, है ना, दैट यू कैन फॉलो एंड कीप ऑन लर्निंग ऑन देम। तो तुम्हारा डुअल एक्सपर्टीज हो जाएगा ना, एनएलयू के थ्रू लॉ और पब्लिक पॉलिसी में भी एक्सपर्टीज आ जाएगी, एंड विथ योर असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स यू विल बी लर्निंग लॉट अबाउट पब्लिक हेल्थ ऑल्सो। और पीयर ग्रुप का कमी कैसे दूर होगा? यू कैन कनेक्ट विद द पीपल हु आर ऑलरेडी स्टडिंग और लर्निंग एमपीएच। तो इस जवाब सीधा क्यों नहीं देती हो? जब ये मैंने सब बोला कि कैपेबिलिटी बताओ इंडिया का, तो तुम सोचती ना कि कैपेबिलिटी किस टर्म में होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एज ए नेशन एपिडेमियोलॉजी को डील करने की कैपेबिलिटी कैसे होती है, तो जैसे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन कम है तो एक्सपर्ट्स भी कम है ना। हमने जो एक्सपर्ट्स कम है तो और इतना बड़ा नेशन है जिसमें एक्सपर्ट्स का नीड चाहिए था, तो अनएक्सपर्ट लोगों ने ये काम किया है हर जगह पे। तुम देखो ना, कहीं के डीएम, कहीं के ये, अब वो पढ़ के रिसर्च करके इस पे काम कर रहे हैं। तो इफ यू वुड हैव बीन हैव एक्सपर्ट्स तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता। जहाँ जहाँ पे कहीं कहीं भी फ्लॉ आया, सिचुएशंस नहीं कंट्रोल हुई, वो इस कारण से भी हुआ है। दूसरा, कैपेबिलिटी के टर्म में तुम ये बताती कि हमारे यहाँ ड्रिल्स नहीं होते, सिस्टम्स नहीं डेवलप है, इंडियनाइज्ड या कस्टमाइज्ड थ्योरीज नहीं डेवलप है, तो ये कैपेबिलिटी के टर्म में बात करोगी ना। फिर तुम्हारे पास तीसरा एकदम, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, तुम क्वेश्चंस को सही से जज नहीं कर पा रही हो कि क्या पूछा गया। जैसे मैंने तुमसे पूछा कि व्हाट एडिसन मोहल्ला क्लिनिक प्रोवाइड, ट्रेडिशनल मैंने बोला था ना, वो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम है। तो ट्रेडिशनली क्या होता है? टर्सरी केयर, सेकेंडरी केयर और प्राइमरी केयर। तो चूंकि प्राइमरी केयर का फिक्स्ड स्ट्रक्चर बनाने में, क्रिएट करने में टाइम लगता है, रिसोर्स लगता है, तो मोहल्ला क्लिनिक कैन एम्पलीफाई योर प्राइमरी केयर स्ट्रक्चर इन मल्टीपल वे, इन अ वेरी, मतलब कम रिसोर्स में भी। हाँ, मेरी बात समझ लो कि विदाउट क्रिएटिंग अ फिक्स रिसोर्स। तो ये कहाँ ऐड ऑन किया? प्राइमरी सेक्टर में। क्या एडवांटेज किया? तो ये मल्टीप्लाई कर दिया यार तुम्हारे एफर्ट्स को विच यू आर प्रोवाइडिंग फॉर प्राइमरी सेक्टर। तो तुम ये सीधा दो ही लाइन बोलोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, रेदर देन एक्सप्लेनिंग बहुत सारा इधर उधर की बात। yes, ये बात समझ आ रही है? तो थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान से दो। मैंने बोला कि क्रिटिक करो इंडियन अटेम्प्ट्स ऑन डीलिंग विथ कोरोना। तो तुमको थोड़ा सा पता है कि नहीं पता है, मतलब हमने थोड़ा सा इस केस में स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी दिया हुआ है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि एवरी स्टेट विल, और फिर स्टेट गवर्नमेंट के बाद हमने और माइक्रो लेवल पे डिस्ट्रिक्ट के डीएम्स को भी ऑटोनॉमी दे रखा है।
तो तुम्हें ये सब बताना चाहिए था कि ये बुरा स्टेप है, या इंटीग्रेटेड रखना चाहिए था, है ना, या इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने जो ब्लॉक किया है, बाउंड्री ब्लॉक की है, तो उसके कारण क्या। तो ये सब तो तुम्हारे अटेम्प्ट्स थे ना जो गवर्नमेंट का, उसको मेंशन ही कर देती ना, इवन विदाउट एक्सप्लेन। एक्सप्लेनिंग और क्रिटिक करने की बजाय। तो थोड़ा दिखता है कि हाँ तुम उस टर्म में सोच तो रही हो, सिंस यू नेवर हैड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन टू आंसर, तो आपने उस तरीके से सोचा नहीं, है ना। अब जैसे मेरे से कोई पूछा तो हम यही बोलेंगे ना भाई कि जो गवर्नमेंट ने इसको डिसेंट्रलाइज किया है, इट इज अ गुड एज वेल एज लिटिल बैड, है ना। थोड़ा सा हमारा इंटीग्रेटेड एफर्ट नहीं हो पाया, ठीक है। ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट को हमने वो दे दिया अलग से ऑटोनॉमी, तो जिस स्टेट की लीडरशिप वीक रही है, जिस स्टेट के पास रिसोर्स नहीं है, अब जैसे बिहार जैसा स्टेट है जिसके पास रिसोर्स नहीं है, तो इवन उनके पास ऑटोनॉमी है बट वो पैसा नहीं खर्च कर सकते। करेक्ट। तो अब इंटीग्रेटेड एफर्ट में थोड़ा रहता है ना कि हम रिसोर्स शेयर कर सकते थे, क्योंकि इट्स अबाउट इंटायर नेशन। ऐसा तो है नहीं कि बिहार में अकेला फैलेगा, अगर कहीं भी फैलेगा तो इट विल गो स्टेट टू स्टेट। तो ये थोड़ा सा ये सब चीजें तुम क्रिटिकली एनालाइज करना था तो ये कर देती, ठीक है। बाकी रेस्ट वाज गुड, है, तुम सही बोलते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो। और यही मैंने 3-4 क्वेश्चन का नोट बनाया था कि तुम यहाँ पे मिस कर रही थी।